हेलो एवरीवन, मैं हूं चंदन विश्वास, आपका दोस्त, और स्वागत है आपका इस ब्रांड न्यू पॉडकास्ट सीरीज में जिसका नाम है जी बिल्कुल। मैं काफ़ी सालों से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ट्रेनिंग के फील्ड से जुड़ा हूं। मैं रोज़ बहुत सारे दोस्तों से मिलता हूं जो बिल्कुल आप ही की तरह जी और नीट की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ पढ़ाई के सवालों के अलावा उनके मन में और भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका उत्तर उन्हें बहुत आसानी से नहीं मिलता। मसलन तैयारी करने की सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे पढ़ें, एग्ज़ाम के प्रति एटीट्यूड कैसे रखें, टाइम को कैसे मैनेज करें, सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस इस एग्ज़ाम में उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी परफेक्ट है, और जो टॉपर्स हैं उनके जैसा हम कैसे बन सकते हैं। मेरे इस पॉडकास्ट का मकसद आपके उन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए है। इस पॉडकास्ट पे हर हफ्ते हम शेयर करेंगे पेप टॉक्स जो आपको तैयारी के लिए किसी भी कदम पर मदद करेंगी। होंगी बहुत अद्भुत रियल लाइफ सक्सेस स्टोरीज जो बन सकती हैं आपके लिए बहुत बड़े इंस्पिरेशन का सोर्स। बीच बीच में हमारे पॉडकास्ट पर हम कुछ ऐसे गेस्ट्स भी बुलाएंगे जिन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल की है, जो आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस खुलकर शेयर करेंगे, जिससे आप उनका फ़ायदा ले सकें और जो गलतियाँ हैं वो करने से आप बचें। तो शुरू करते हैं हमारा पहला सीरीज़ और पहला एपिसोड। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड प्रॉब्लम्स। इतने साल हो गए मुझे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हुए। कुछ क्वेश्चंस मुझे इनवेरिएबली हर बार सुनने को मिलते हैं, आइदर स्टूडेंट्स के साथ या फिर उनके पेरेंट्स के साथ। इन क्वेश्चंस की खूबी ये है कि ये बहुत बार रिपीटेड भी होते हैं, बहुत बार कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं और कुछ तो डाउनराइट फनी भी होते हैं। आइए देखते हैं और नज़र डालते हैं इन क्वेश्चंस के ऊपर और उसको वंस एंड फॉर ऑल दूर कर देते हैं। पहला सवाल, Why is this necessary to learn this at all? ये इसका उत्तर सीधा है, क्योंकि ये अगर पढ़ेंगे नहीं तो आपको रिजल्ट नहीं आने वाले हैं, क्योंकि मार्क्स नहीं आने वाले हैं। टू बी ऑनेस्ट, ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ये लार्जली फ्लॉड है। हम जानते हैं कि इसमें 90% चीज़ें जो हम सीखते हैं वो रियल लाइफ में काम नहीं आती है, और जो काम आती है वो सारी चीज़ें आपको कॉलेज जाने के बाद आपको हैंडी होती हैं। तो पॉइंट ये है कि क्यों पढ़ना है इसे। तो सीधा उत्तर यही है, आपको एग्जाम क्लियर करना है और आपको अच्छे नंबर लाने हैं, क्योंकि अगर आप सॉल्व नहीं करेंगे, सब सीखेंगे नहीं, तो जाहिर सी बात है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप टिक नहीं पाएंगे। ऑफ कोर्स दैट्स द थिंग, दिस इज हाउ इट इज नेसेसरी टू लर्न दिस ऑल। सवाल नंबर 2, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मटेरियल याद कैसे करें? There's just too much to remember. Easy solution is just a phrase. What is it? How do you eat an elephant? One bite at a time. इतना सारा कॉम्प्लिकेटेड मटेरियल याद करने के लिए और समझने के लिए you need time, and that is why time plays such a crucial major factor in the preparation of JEE. The thing is, हमारी टेंडेंसी होती है समय बर्बाद करने की, so of course आपको इतना सारा complicated material एक कम टाइम में squeeze करना almost impossible है. So that's the thing. The only simple trick and the secret ingredient to remember all this complicated material is time. Just do little by little for an extended period of time, and then, my friends, you will be an expert. It's my guarantee. सवाल नंबर 3, टीचर्स को एक ही सब्जेक्ट पढ़ाना होता है, लेकिन स्टूडेंट को सारे सब्जेक्ट्स याद रखने होते हैं ईच एंड एवरी डिटेल के साथ। दैट इज प्रीटी मच अनफेयर। तो इस सवाल का उत्तर ये है कि एग्जाम तो आप ही को देना है, राइट? चैलेंज है तो चैलेंज को एक्सेप्ट करना जरूरी है। एंड बिसाइड्स, टीचर को एक सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होना होता है, लेकिन आपको उसी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट नहीं होना होता है। यू जस्ट नीड टू गेट द बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, दैट्स इट। एग्जाम के लिए जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से आप अगर सब कुछ याद रख सकें, दैट इज इनफ फॉर योर वर्क, राइट? यू डोंट हैव टू टेक इट फॉर एवर कि सारी जिंदगी याद रखना है। आफ्टर ऑल, जस्ट मेमोराइज इट टिल द एग्जाम इज ओवर, ऑफ कोर्स। उसके बाद कौन याद रखता है, राइट? दैट्स क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न नंबर 4, ये क्वेश्चन है कि हमें मैथ्स क्यों करना है जब हमारे पास कंप्यूटर्स और कैलकुलेटर्स पहले से ही हैं। नाउ दिस वन इज समथिंग व्हिच आई कॉल डाउनराइट स्टूपिड। अगर कंप्यूटर्स और कैलकुलेटर्स पहले से ही मौजूद हैं तो एग्जाम्स देने के लिए ह्यूमंस को क्यों बुलाया है? तो फिर आपका वैसे भी कोई रोल नहीं है। द एंटायर वर्ल्ड इज ऑलरेडी टू बी टेकन ओवर बाय मशीन्स। दैट्स व्हाट यू आर इंटरप्रेटिंग? ऑफ कोर्स नॉट। एक और बहुत ही माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन आता है, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे घर में क्या हम पूजा रखवा सकते हैं जिससे कि हमारे बच्चे के दिमाग पे बहुत अच्छा असर पड़े? दिस वन आई कॉल डाउनराइट स्टूपिड। हम लोग साइंस पढ़ते हैं, हमें पता है कि इन सब का कोई एक्चुअल मीनिंग नहीं होता है। दिस इज टोटली साइकोलॉजिकल एंड इट फिजल्स आउट।
अज्यूमिंग कि आपको पूजा करके अच्छी फीलिंग आती भी है, बट यू नीड कॉन्स्टेंट वर्क टू डू। आई मीन पूजा करने से अगर सब कुछ होता तो फिर चंद्रयान पूजा करके ही भेज देते हम। नेक्स्ट आउटरेजियस क्वेश्चन, मुझे इंजीनियर या डॉक्टर बनना ही नहीं है, मुझे तो एथलीट बनना है, सो व्हाई शुड आई स्टडी दिस? ऊपर से मुझे स्पोर्ट्स कोटा में एडवांटेज भी है। नाउ लेट मी आस्क यू क्वेश्चन, इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, ये सब पढ़ने का डिसीजन किसका था? आपका ही, राइट? तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो आपको ही झेलने पड़ेंगे, राइट? ऑफ कोर्स इफ यू आर मोर इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स देन व्हाई डोंट यू पिक अ इजियर सब्जेक्ट वेयर यू आर श्योर दैट यू विल बी एबल टू मैनेज। डबल लोड लेने का कोई पॉइंट नहीं है। जो बेस्ट क्वेश्चन है, आई मीन द बेस्ट आउटरेजियस क्वेश्चन, ये मैंने लास्ट के लिए छोड़ के रखा था। ये क्वेश्चन है कि डू यू हैव एनी शॉर्टकट जिससे हमें ग्रेट मार्क्स आ जाएं विदाउट स्पेंडिंग टाइम मच इन स्टडीइंग? अब इसके उत्तर के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही लाइन है, अगर ये इतना ही इजी होता सब कुछ करना तो almost everybody would have done that. Then why are so few toppers, right? Just think about that. Now people who are already in this field for extended periods of time, like who are very much experienced in teaching, sometimes they don't change with time. For example, कुछ लोग बोलेंगे the old and redundant methods. Let's say they will say that don't get distracted much. उनके ज़माने में टीवी, फ़ोन, मोबाइल, इंटरनेट ऐसा कुछ नहीं था, ये सब बैन हो जाना चाहिए बच्चों के लिए। Now we cannot live with these things, can we? हमें आज के समय के साथ साथ चीज़ों को बदलना ज़रूरी है, हमें नए तरीके अपनाने बहुत ज़रूरी होते हैं, समय के साथ साथ अडेप्ट भी होना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास चैट ग्रुप्स बंद हो जाए, फॉर एग्जाम्पल, बहुत लोगों को एक्सेस भी नहीं मिलेगी अच्छे कंटेंट की। आई नो दे आर टाइम वेस्टर्स, बट द ट्रूथ इज इन टुडेज वर्ल्ड इन 2021 यू कैनॉट लिव विदाउट देम, राइट? एट द सेम टाइम ये बात ध्यान रखना बहुत बहुत ज़रूरी है कि हर एग्ज़ाम एक जैसा नहीं होता है, कि स्टडी पैटर्न्स जो होते हैं हर करिकुलम के हिसाब से बहुत ज़्यादा वैरी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हो, दैट एग्जाम इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ जेईई, और दैट इन टर्न इज ऑल्सो वेरी डिफरेंट जो बोर्ड्स के कंपैरिजन में होता है। बोर्ड्स की तैयारी और जेईई की तैयारी एक नहीं है, नीट की तैयारी भी एक जैसी नहीं है, सैट की तैयारी भी एक जैसा नहीं है, या कैट की तैयारी भी एक जैसा नहीं है। देयर इज नो वन साइड फिट्स ऑल अप्रोच। दैट मीन्स यू हैव टू रियली मॉडिफाई योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस ऑलवेज इन ऑर्डर टू फिट दैट सिचुएशन। यू हैव टू डू सम मॉडिफिकेशंस इन योर स्टडीइंग स्ट्रेटजी इन ऑर्डर टू परफॉर्म वेल इन अ पर्टिकुलर एग्जाम। और इसी के लिए हमने ये पॉडकास्ट आपके लिए शुरू किया है, जिससे हम अलग अलग फील्ड की तैयारी करने की स्ट्रैटेजीज आपके साथ शेयर कर सकते हैं। अब हम आपसे शेयर करेंगे कुछ वैल्यूएबल लर्निंग्स, और इस लर्निंग के लिए सबसे पहली चीज जो मैं आपको शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा इज दैट नथिंग इज गोइंग टू वर्क फॉर यू अनलेस यू डू। कहना बहुत आसान होता है, करना बहुत मुश्किल। इसीलिए मैं चाहता हूं कि जो भी आप सुने, कोशिश करें कि उसकी सारी की सारी बातें आप उसको अपने जीवन में उतार पाएं, या फिर अगर आपको उससे जुड़ी हुई कुछ सुझाव हैं या प्रश्न हैं, आप अपने प्रश्न को इस पॉडकास्ट की दी हुई लिंक पर आप मुझे शेयर कर सकते हैं। हो सकता है अगले एपिसोड में आपके साथ उस वॉइस नोट को हम फीचर भी करें। सो हैव अ लुक आउट ऑन दैट एंड प्लीज सेंड योर वैल्यूएबल क्वेश्चंस एंड सजेशंस। आज के मेहमान, इस सेगमेंट में आज हम मिलेंगे साई नितिन कृष्णा से, जो काम कर रहे हैं पेगा सिस्टम्स के अंदर। टेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रही एक कंपनी में, वो उनकी स्टार्टअप भी है, और साथ ही साथ हम सीखेंगे साई नितिन कृष्णा से जेईई के प्रिपरेशन की टिप्स। तो आइए स्वागत करते हैं साई नितिन कृष्णा। साई नितिन कृष्णा, वेरी वेरी वेलकम टू आवर शो। Thanks, Chandan. So, Nitin, can you please tell something about yourself to our audience? My name is Sai Nithin Krishna, and I graduated from IIT Madras from 2014 from Naval Architecture and Ocean Engineering branch. उसके बाद I've worked for a company called Orley Parsons. It's a multinational company. They are into subsea engineering, basically. Underwater engineering for pipelines, ships, and all those things. And then I had a startup also in the meantime, wherein we are into robotics. Right? We generally deal with the Indian Army. We used to visit Jammu and Kashmir, and in one of those attacks also they had used one of our drones. That is so much inspiring to our listeners, right? So yeah, exactly. So people will want to become like you. So can you tell me something about what you currently into?
I was always interested in maths, by like numbers, and then job wherein I had more to do with numbers and data analytics and a startup. Basically, we had a product, data visualization product. Basically, if you have some data, you can put it on it and see results for yourself, like how is your sales doing, how is your anything. Basically, if you have sensors, let us say Tata Power has sensors across the country, and one person will not know what is happening across the country, right? So if they put the data on this dashboard, they can see what's happening across the country, and they can take decisions what to do next. That kind of tool we have built. Eventually, in 3 years, that company got acquired by a bigger company. Basically, it's Pegasystems from US. They acquired us, and then now we are working for them using our technology. And I would credit everything to studying at a premier institute, because that's how you get at least access to people, opportunities. People will at least see your resume before they say no. That's a great thing which you're doing, Nathan. What I want to ask you, our listeners will want to know, like, how you prepared for JEE and what things which you used to do while preparing, and how many hours you studied, what are things which you focused on, which subject was the most which you stressed. These kind of things, can you tell to our listeners? I had no clue what is IIT when I was in 10th class. My friends were, class toppers. They always used to read newspapers and they used to talk about, but we were not in that circles, right? So it's easy to get that information, and eventually got into an institute where they just teach IIT and nothing else, IIT JEE preparation and nothing else, right? The first eye-opener for me was when I got into this one of the class where professor, I don't remember the lecturer, what lecture also, he just listed down all the colleges in the country in a rank-wise manner, and then he just told us, if you don't study well, you would land in somewhere around 50th college or something, you will not be even known. That's a big eye-opener for someone sitting in the classroom. So that made a huge impact on how you started thinking after that point. Yes, actually, I am from a Kendriya Vidyalaya CBSE background. Back in our town, people, with even 83%, you were decently good in a school level, right? It would be somewhere around 3rd or 4th rank or something like that. And you'll feel happy about yourself. But when you come out of that and, join these coaching centers, you'll see that there are a lot of toppers around you. And everyone is around 95%. Yeah, it's actually more challenging just to get ahead of them first than getting the seat. Forget about getting the seat, right? You get insecure. I get the point. So how did you prepare while you were studying? How many hours did you study? Right. So when I started out, it was because I had around 85% in the 10th. I got to be in a section where I had to focus also on the regular classes also, like plus 1 plus 2 also, not just JEE. So it was consuming a lot of our time actually. I'm sure many of our listeners also face the same problem. These exams are important. The plus 1 plus 2 exams are important because if pass percentage goes down, they don't feel good about it. Forget about getting IIT JEE or something like that. But basic to hona hai na, we have to pass the plus 1 plus 2. So they focus more on that. People may take that for granted and ignore that. So that's the reason they teach us. So I had very little time to spend on JEE. For that reason, you have to double up the effort and spend the, for example, if you have just 8 hours to spend for JEE, you may have to cut down on your sleep and squeeze in more hours there, like maybe 12 hours. And my favorite subject was always maths. I used to spend a lot of time on that, and I used to spend half day on that because I liked it. Most of the time people around me used to come for the doubts, and the rest of the half used to go for the maths still. I got better by teaching actually. People used to learn from you. That's what you're saying? Yes. I for the listeners actually, if you know something, if you tell a couple of people, they feel empowered. They will know, and you will know more, and you can take 2-3 people along with you. That's how you can actually grow, because everyone will not have the same facilities around us, right?
That's well put. Right, so it's just that I was little fortunate to be in a college where there were good professors to teach JEE. It just happened that, but there was a lot of competition amongst people. The first, second, third rankers, they were always in contention to. They never shared knowledge. Actually, that's the bad part. But when you start sharing, you can actually compete with the first rankers of the JEE itself, not fight among the college level, right? That's a very good knowledgeable piece which you gave, Nitin, that when you teach something which you know already to some other friends of yours, your knowledge actually grows much, much better. Yeah, it re-emphasizes with you because you tell it again. Yes, that's true. That's very, very well put. This is one of the major takeaway which our listeners can take away from your story. And it's the same thing happens with the professors, right? They teach a lot. That's the reason they for sure that this is the right way and the right answer. Absolutely. That's a great advice, Nitin. So for our listeners, can you tell me some list of do's and don'ts? One of the biggest do's you should do is everyone is afraid of taking exams. IIT JEE will be the first exam in your plus 1 plus 2 career. I suggest you to take as many exams as possible before the main exam because you should not be afraid of the exam. You should be prepared for the exam, and the only way is the practice. And make all the mistakes when you are preparing, not during the exam. So you want to try a combination maths, physics, chemistry, do it before the actual exam. I didn't do that. I tried. Instincts kick in when you are in a pressure situation, wherein IIT was my first exam back then, so maths was my first favorite. Then unfortunately that year maths paper was super tough. If I had spent the half amount of some same time on chemistry or physics, I would have scored more, because we don't behave rational when we are in pressure. That pressure is because we are not really prepared most of the time. Sometimes you get lucky, sometimes you have to be prepared to get lucky. That's very well put. So what are the things which our listeners should not do, at least avoid totally while preparing for JEE? Yes, avoid preparing. So everything will have a weightage, right? Don't brush up on the top and then top layer and leave it. If you know what is differentiation fundamentally, you don't have to worry about what is cos theta's differential integration or whatever it is. Just ask more questions the very first time you encounter something new, and then you never have to remember anything in maths actually. At least in the maths. I'm sure you'll have more in physics and chemistry, but always ask more questions in the first and try to make sense of why is e power x minus 1 by x is equal to 1. Someone should tell you. If they are not telling you, they are not teaching you right. I suggest when you are preparing, ask more questions on why something is that way, and not just by heart or remember things. The moment you remember, you are relying on something which is not, human tendency is to forget things. If you rely on your memory, it's not easy to retrieve most of the time. Because especially for JEE, nobody will ask you out of your memory. They want to know how do you approach a problem. Yes, if they had to test you on your memory, they would ask you some history questions, not the maths problems, right? So understand things in the better form rather than just memorizing it. That's the basic summary, right? Exactly. This is more about application rather than just remembering stuff like we used to do in school. That's a very, very good, knowledgeable talk from you, Nitin. I think this will help our listeners very, very greatly. Thank you so much for joining our show. So it was a great talk and the listeners will benefit from it. Thank you, Nitin. Bye-bye. Sure, I'm sure. Coming up next, an inspirational story of Srikanth Bolla. Stay tuned to JEE Bilkul. श्रीकांत का जन्म एक आंध्र प्रदेश के गांव में हुआ था। उनकी जन्म से ही देखने की शक्ति नहीं थी। उनके पड़ोसी ने उनके पेरेंट्स को यह सुझाव दिया कि उनकी जीवन को ही नष्ट कर दिया जाए, लेकिन उसके माता पिता ज़्यादा पढ़े लिखे न होने के कारण और केवल 20,000 प्रति वर्ष कमाने के कारण उनके मिसगाइडेड एडवाइस को लेना ठीक नहीं समझे और उसे प्रेम और स्नेह के साथ उसको बड़ा किया।
भले ही वो अंधे थे और गरीब थे, श्रीकांत को उनके गांव के बैक बेंच पर रहने दिया जाता था। उनको खेलने की अनुमति भी नहीं थी बाकी दोस्तों के साथ। उसके पिताजी ने किसी तरह उसे हैदराबाद के स्पेशल स्कूल में दाखिला देने का मैनेजमेंट कर लिया। यहाँ पे उन्होंने ना ही सिर्फ चेस खेलना सीखा और क्रिकेट भी खेलना सीखा, बट उसमें काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस भी किया, अपने क्लास को टॉप किया और साथ ही साथ स्वर्गीय राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के साथ उन्हें काम करने का भी मौका मिला इन हिज लीड इंडिया प्रोजेक्ट। उन्होंने अपनी 10th स्टैंडर्ड की एग्जाम्स को ऑलमोस्ट 90% से ऊपर स्कोर किया, बट अनफॉर्चुनेटली उन्हें साइंस की स्ट्रीम लेने से डिनाई कर दिया गया। रीज़न उनकी डिसेबिलिटी। श्रीकांत ने लीगल तरीका अपनाने का सोचा। उन्होंने कंपनीज को और इंस्टीट्यूशंस को सू किया ताकि उन्हें साइंस के सब्जेक्ट में उन्हें परमिशन मिल सके। ये सब कुछ उन्होंने किया, लेकिन गवर्नमेंट ने उन्हें परमिशन दी कि आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं, लेकिन केवल अपने खुद के रिस्क पर। उन्होंने सारे के सारे टेक्स्ट बुक्स को ऑडियो बुक्स में कन्वर्ट कराया। अपने कैसेट्स पे वो सुनते रहते थे। एक्सेप्शनली वर्क हार्ड कर करके 98% लेकर आए 12th के बोर्ड्स के अंदर। अब उनकी नेक्स्ट चैलेंज शुरू हुई है कि IIT और बिट्स जैसे बड़े बड़े लीडिंग इंस्टीट्यूट्स उसे परमिशन देने के लिए नहीं राजी हुए, बिकॉज वही रीज़न, ही वॉज ब्लाइंड। उस समय श्रीकांत की एज 18 साल थी। इनफैक्ट उन्होंने फिर अप्लाई किया और उन्होंने स्कॉलरशिप के दम पर प्रेस्टिजियस MIT यानी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी US में अंदर फर्स्ट इंटरनेशनल ब्लाइंड स्टूडेंट का दर्जा पाकर वहाँ पे एडमिट हुए। वहाँ पे उन्होंने अपनी स्टडी कंप्लीट की और उन्होंने डिसाइड किया कॉर्पोरेट वर्ल्ड ऑफ अमेरिका वहाँ पे उन्हें नहीं रहना। उन्होंने कोशिश की और उन्होंने इंडिया वापस आकर के क्रिएटिव सॉल्यूशंस निकाले इन ऑर्डर टू जनरेट रोज़गार। आज श्रीकांत एक एंटरप्रेन्योर हैं और उनके 4 प्रोडक्शन प्लांट्स हैं जो इको फ्रेंडली और डिस्पोजेबल कंज्यूमर पैकेजिंग सॉल्यूशंस काम करते हैं। मज़े की बात यह है कि उनका एंटायर एक प्लांट सोलर पावर्ड, कम्प्लीटली सोलर पावर्ड है, जो एक आंध्र प्रदेश में खुल गया है। उनकी साथ जो वर्कफोर्स है उसमें 70% पीपल डिसेबिलिटीज़ से जूझ रहे हैं और सिर्फ उन्होंने रोज़गार दिया है। उनका सेल्स का जो टर्नओवर है साल का, दैट इज़ ऑलमोस्ट 500 मिलियन। श्रीकांत इस कन्विक्शन के साथ वो कहते हैं कि अगर दुनिया उन्हें किसी और नज़र से देखती तो सबसे पहले यही सुनने को मिलता कि श्रीकांत, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। नाउ ही सेज दैट आई लुक बैक एट द वर्ल्ड एंड से आई कैन डू एनीथिंग। सो क्या सीखा आपने श्रीकांत की स्टोरी से? सो श्रीकांत की स्टोरी बहुत कुछ सिखाती है, सोचने वाली बात है। So that brings us to the end of our first episode of the podcast. उम्मीद करता हूँ आपको ये शो बहुत पसंद आया होगा। आप अपने सुझाव और अपने अनुभव मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। इस पेज का इंस्टाग्राम है JEE.Bilkul। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं नई कहानियों के साथ और नए गेस्ट के साथ जो आपको और भी ज़्यादा प्रेरणा देंगे। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट वीक अहेड।